Then we start. INSTRU. दोन मिनिटं मित्रांनो. ओके. Good morning all. Good morning. Sir. Good morning.
Okay, so now factorial notations. So my next point is what your factorial notation. So write down factorial notation. Suppose the product of the positive integer from 1 to n inclusive. Suppose your integer from 1 to n inclusive is denoted by n factorial. We read as a n factorial. So suppose we write here the product of positive integer from 1 to n, from whatever 1 to n inclusive is denoted by n factorial, is denoted by n factorial. So we read as a read n factorial, right? We read as a n factorial. So suppose we can write here n factorial equal to what here 1 into 2 into 3 into dash 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 into n minus 2 into n minus 1 into n. So last one लिखा है n. So in other words, n factorial is defined by. So in other words, n factorial is defined by 1 factorial, that is your 1, and n factorial equal to what your n into n minus 1 factorial. This is simple formula. N factorial equal to n minus 1, n into n minus 1 factorial. Suppose, for example, so when we need to define 0 factorial, this value is always 1. 0 factorial value is always 1. Clear? Freedom. यहाँ तक लिख लो, पहले फिर आगे जाते हैं हम लोग. Factorial notations. The product of positive integer from 1 to n inclusive n is denoted by n factorial. So n factorial what here 1 into 2 into 3 into dash 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 n minus 2 and minus 1 into n. So in other words, your n factorial defined as n into n minus 1 factorial. So value of 0 factorial is always 1. Value of this 0 factorial is always 1. Freedom. करून टाका साफ का कोण नाही म्हणत का कोणी नाही म्हणत साफ करायला क्लियर हो गया आपका Yes, sir. ओके Yes, सो sir. ओके डाउन लिख लो 2 लेक्चर से हमारे आज टेंशन मत लो चालू ना करा तुम्ही करा
Okay. So now, Yes, sir. for example, suppose we can write, suppose we can write here 2 factorial. So it means what here? 1 into 2. So answer is 2. Okay. Suppose 3 factorial. So we can write 1 into 2 into 3. Answer is what here? 6. 4 factorial. So we can write what here? 1 into 2 into 3 into 4. That is answer is what here? 24. Right? Suppose we can write 5 factorial. It means what here? 5 into 4 factorial. ऐसे लिखा तो भी चलेगा और 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So this value is what your 120. Again 6 factorial. So we can write 6 into 5 factorial means what your 6 into 120, that is 720. चलेगा ऐसे? ये आपका सिंपल एग्जांपल. इसके बाद suppose we can write like this examples. Suppose 8 factorial upon 6 factorial. अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? 8 factorial upon 6 factorial means what your 8 into 7 into 6 factorial upon what your 6 factorial. This value get cancel. So we can write only 8 into 7. So that is 56. Clear यहाँ तक? Yes, sir. Again, suppose you can write 12 factorial upon 9 factorial. This value is for factorial. Notation is for factorial. So again, we write 12 into 11 into 12 into 9 factorial upon 9 factorial. This value will cancel. So we can write 12 into 11 into 10. So calculation is what your आप define करो क्या होगा calculation. Clear? Write down. Simple factorial notations. Clear? Yes, sir. Okay. So now next point is what your binomial coefficient. So we can write binomial coefficient because we can use permutation and combinations. So before that we can use the basic things. You can see here basic thing, that is your binomial coefficients. What is binomial coefficients? Computer DM. हे ऑलरेडी म्हणजे घेतलं होतं 10 ते 11 ते सोने मॅडमच्या खालचं कम्प्युटरचे माझं आहे.
नाही नाही तेच तू पाहिजे असेल. So binomial coefficients. Okay. So the simple symbol is there. The symbol NCR. We can write here NR. So for this NR, we read as a NCR, where R and N are positive integers with R is less than equal to N. So it's defined as follows. Is defined as simple formula is what your NR square bracket जाएगी असल bracket है simple. Defined as a n into n minus 1 into n minus 2 dash n minus r plus 1 upon 1 into 2 into 3 into dash r minus 1 into r. This is a simple definition of NCRs for binomial coefficients. So we can write this value as the r n r equal to, instead of this value, n into n minus 1 n minus 2 dash n minus r plus 1 upon 1 into 2 into 3 into r minus 1 into r. So we can write this value as a n factorial upon here r factorial n minus r factorial. It's a simple formula of NCR. So instead of this, we can write simple NR equal to means NCR equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. ये लिख लो पहले फिर हम प्रॉब्लम देखते हैं उसमें आपको समझ में आएगा. So we read as a NCR equal to, but here n minus r equal to what your r. So write down nr equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Right? श्रावणी करता है क्या? Yes, sir. ओके.
Clear? Yes, sir. Yes, sir. So for simple example is there. Example. First, 8 and 2. 8C2. ओके, सो अब देखो यहाँ पे देखो फार्मूला क्या दिया फार्मूला हमारे पास n n माइनस वन n माइनस टू n and r, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है? सो हियर n इक्वल टू 8 and r equal to what? 2. So my formula is what here? n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus 1. So n minus r means what here? कहाँ तक जाएगा? r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2. So n minus r प्लस 1 मतलब n की वैल्यू 8, 8 माइनस r मतलब 8 माइनस 2, 6, 6 प्लस 1, तो कहाँ हो जाएगा हम लोगों को? वैल्यू कहाँ जाएगा? 7 तक. सो दिस वैल्यू इज व्हाट योर 8 into 7, right? And here 1 into 2 into 3 into r minus 1 into r minus 1, r minus 1 कितना है? r minus 1 कितनी वैल्यू r minus 1 की? बोलो रे भाई. 1. 1, sir. 1 है. सो यहाँ पे क्या है फिर? 1 into 2, right? So this value is what here? यहाँ से ये कैंसिल होगा. So my total answer is 28. Clear? Second problem. 9 4. क्या होगा फिर यहाँ पे? 9 into 9 minus 4 ना, 9 minus 4. अगर सपोज यहाँ पे क्या करके हम लोग n फैक्टोरियल, सिंपल फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल अपॉन r मीन्स 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, दैट इज योर 5 फैक्टोरियल. क्लियर यहां तक? अब इसको हम लोग Yes, कैसे sir. लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे कैसे फिर? सो 9 फैक्टोरियल मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. तो क्या करो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तक लिखो. 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो मैं यहां से ये निकाल देता हूँ. सो क्या करता हूँ? 5 फैक्टोरियल तक लेता हूँ. चलेगा ना? So this value get cancel. It means what your 9 into 8 into 7 into 6 upon 1 into 2 into 3 into 4, 4 factorial. So total value is what your, अब यहाँ पे जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, उसकी टोटल वैल्यू क्या आती है फिर वो निकालो. क्लियर? यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू निकाल के मुझे बताओ बाद में. सेकंड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम भी देखते हैं, उसके बाद में लिखो आप. थर्ड प्रॉब्लम. सपोज वी कैन राइट हियर 12 5. So 12 means what here? अगर सीधा फार्मूला क्या क्या होगा? सीधा फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन क्या फार्मूला है? n फैक्टोरियल अपॉन R factorial. r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r N minus. फैक्टोरियल. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 7 फैक्टोरियल. राइट यहाँ तक? अब Yes. ये 12 फैक्टोरियल मीन्स क्या हो जाएगा फिर? 12 into 11 into 12 into 9 into 8 into 7 factorial upon 5 factorial upon 5 factorial into 7 factorial. This value get cancelled. It means what your 12 into 11 into 10 into 9 into 8 upon 1 into 2 into 3 into 4 into 5. यहाँ से आंसर निकालो, लिखो यहाँ पे. क्लियर? This is your NCR. Yes, sir. Write down. ये सिंपल प्रॉब्लम से लिख लो पहले. ऑनलाइन में को पूछ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 8 2 की वैल्यू क्या आएगी, तो दैट इज 28. 9 4 की वैल्यू क्या आएगी वो आपको फार्मूला पता चाहिए, इसलिए फार्मूला याद रखो. n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. सो राइट डाउन.
क्लियर हो गया? इसका आंसर Yes, बोलो sir. मुझे क्या है? इसका आंसर 120, क्या है? हाँ, 126, 126. 126 एंड दूसरा 792. 700. 792. ओके, नाउ इन अनदर केस यही फार्मूला, सिर्फ क्या करना है हमें, देखो फार्मूला सेम है, बट सिंपली n माइनस आर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? आर, राइट? राइट ना? सो Yes, sir. we use important relation. So n माइनस आर, इसका मीनिंग क्या होगा फिर? एन आर, राइट? सो इफ a plus b equal to n, then we can write n of a equal to n of b. N of a equal to n of b. It means what here? N r has exactly r factors in both the numerator and the denominator. So suppose compute here, for example, इसका एग्जांपल लेता हूँ, फिर बाद में लिखा आप एग्जांपल 10(7) बाय डेफिनेशन, जो भी हम लोगों ने लिए, उससे क्या होगा? बाय डेफिनेशन से 10(7) इक्वल टू व्हाट ईयर? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4, right ना? By definition n minus r minus r plus 1, right? आगे यहाँ तक 4 तक, इसे क्या होगा? 1 into 2 into 3 4 5 6 7, इसकी वैल्यू आएगी टोटल हमारी 120. अब यही फॉर्मूला इन अदर वर्ड्स, n माइनस आर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा? 3. सो दिस वैल्यू इज व्हाट योर 10 3. देखो ना 10 3, अब ये आंसर और आंसर दोनों सेम है, देखो 10 3 मीन्स व्हाट योर 10 7, 10 C7 इक्वल टू 10 3 इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला? 10 into 9 into 8 अपॉन 1 into 2 into 3, आगे वैल्यू 120. हमारा फार्मूला क्या था? हमारे पास फार्मूला क्या है? क्या है फार्मूला हमारे पास? ये मेन फार्मूला, ये आपका मेन फार्मूला कहाँ गया? इसमें ये आपका मेन फॉर्मूला क्या था? n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस r प्लस 1 एंड r माइनस 1 इंटू r, ये आपका फार्मूला, मेन फार्मूला.
सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये जो भी वैल्यू आ रही है तो दोनों क्या हो रही है, सेम आ रही है, राइट। सो लिख लो, अगर ऐसा रिलेशन आपको दिया होगा तो भी ये रिलेशन का आंसर भी सेम वही आएगा, एन एन माइनस आर इक्वल टू एन आर, सो योर ए प्लस बी इक्वल टू योर एन। सपोज योर बाय डेफिनेशन दिस वैल्यू आंसर इज 120, इन अदर वर्ड्स एन माइनस आर बी सॉर्ट योर 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, so 10 c 3 equal to same answer by using formula. Clear? प्रबळ येस प्रबळ सर. कळते बा. हो सर, समजतंय सगळं. ठीक आहे. Clear? येस सर. Yes, Okay. sir. So now my next point is what your binomial coefficient Pascal triangles. And Pascal's triangle. सिद्धांत आता येतो बघा. The numbers NR are also called, NCR are also called binomial coefficients.
also called the binomial coefficients. So since they appear as the coefficient in the expansion of a plus b raised to n, in the expansion of a plus b raised to n. So therefore, a plus b raised to n equal to summation of k equal to 0 to n of k raised to the power a raised to n minus k bk, n minus k b raised to k. A simple formula. Okay. So here the coefficient of successive power of a plus b can be arranged in triangular way. So here the successive power of a plus b can be arranged in triangular array. In triangular array of numbers called Pascal's triangle. Triangular array of numbers called Pascal's triangle. Called Pascal's triangles. Okay. So here, so Pascal triangles have the some intersecting properties. So some properties of properties. So first property, your first number and last number in each row is 1. The first number, Pascal triangle में क्या होगा? First number and last number in each row is 1. This is your first property. So आपका first number and last number क्या होना चाहिए? 1. Then every other number in the array can be obtained by adding the two numbers appearing directly above two numbers appearing directly above it. For example, suppose अगर 10 लेना है. For example, 10 means out your 4 plus 6. 15 means out your 5 plus 10. 20 means out your 10 plus 10. देखते हैं कैसे आएगा. Okay. So suppose here, for example, ये थ्योरम देता हूं मैं आपको, उसके बाद में समझ आएगा कि कैसे आएगा ट्रायंगल. So here theorem, so this value is what your n plus 1 r equal to n minus 1 plus nr. आपका simple theorem है. So here my first value is what your a plus b equal to 0. देखो अभी ट्रायंगल कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ. a plus b equal to 1. Then suppose we can write here a plus b raised to the power 1.
So we can write here a plus b, right ना? अगर सपोज a प्लस बी पावर 2 क्या होगा फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Suppose we can write here a plus b raised to the power 3 क्या होगा फिर a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. हमें यहां तक फॉर्मूला पता है, पर अगर सपोज a प्लस बी रेस टू 4 आ गया तो कैसे लिखेंगे? सो a रेस टू 4 फॉर्मूला तो पता नहीं है, 4a क्यूब b प्लस 6a² b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेस टू 4. अगेन सेम a प्लस b रेस टू 5. अगर ऐसे आता है, हमें ये फार्मूले याद नहीं रहेंगे, तो उसके लिए मैं सीधा सिंपल ऑप्शन देता हूं आपको, कैसे निकालना दिखाता हूं. तो यहाँ पे वी कैन राइट a रेस टू 5 प्लस 5 इंटू a रेस टू 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर. ये डिक्रीज करना है, ये इंक्रीज करना है. 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब, राइट, प्लस 5a b रेस टू 4 प्लस b रेस टू 5. क्लियर? नाउ अगेन लास्ट a प्लस b रेस टू 6. अगर ऐसे आएगा तो a रेस टू 6 प्लस, so we can write 6a raised to 5b, right ना, प्लस मल्टीप्लिकेशन टू 2 क्या होगा फिर 15 a raised to 4b स्क्वायर प्लस 20 a raised to 3 b raised to 3 प्लस 15 a स्क्वायर a raised to power 4 प्लस 6a b raised to 5 प्लस b raised to 6, लाइक दिस. अब यही ट्रायंगल हमें इधर निकालना है बाय यूजिंग वैल्यूज. देखो अभी यहाँ पे सपोज मैंने वैल्यू ली 1, नीचे क्या आएगा a प्लस बी मीन्स 1 प्लस 1 ना, दैट इज 1 प्लस 1, राइट. अब नीचे क्या है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना. क्या होगा फिर? बोलो बोलो. 1 to 1. 1 2 1. देखो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू क्या हुई 1. अब थर्ड a प्लस बी क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर क्या होगा फिर 1. देन 3 3. 3 1. क्लियर? देन 1 अगेन 1 क्या होगा 4 6 है ना, अगेन 4 and then 1. Okay, then next 1 5 10 again 10 5 and 1, and last value is out here 1 6 15 20 15 6 1. अब देखो मैंने आपको वही बताया, फर्स्ट एंड लास्ट क्या होती है आपकी 1 होती है. ओके, उसके बाद देखो अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग कैसे निकालते. देखो अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है 6 है ना, 6 दिख रहा है आपको, तो 15 लेते 15. 15 means what your addition of these above two numbers 5 plus 10. अब 20 लिया तो क्या होगा 20 दिस वैल्यू 10 plus 10. अब ये 10 लेते हैं, 10 means what your this value 4 plus 6. अभी ये अगर ये 10 लेते हैं 6 plus 4, ये 5 लेते हैं 4 plus 1. क्लियर? 4 plus 1 like this. इसमें हमने लिखा हुआ ऊपर एवरी अदर नंबर इन द एरे
So we can write here second note, every other number in the array by adding two numbers appearing directly from it, directly above it. Appearing two numbers directly above it. Okay, clear? Yes, sir. This is your Pascal triangle. So यहाँ से लिख लो पहले, फिर आगे जाते हैं हम लोग. इसके बाद हमें स्टार्ट करना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस. Write down binomial coefficient in Pascal. ये यहाँ तक लिखो पहले, फिर मैं आगे करता हूँ. Write down. 2 लेक्चर कंटिन्यू चलेगा ना आपको? श्रावणी, अनुजय, प्रभा, Yes, sir. Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? सुरंजलि, मेन आपकी कौन है? मयूरी, जुई, No, sir. जुई भाई, काही प्रॉब्लेम नाही ना? No, sir. चालेल. आता कंटाळ येईल तुला, नाही तुला गायब होशील तो. देखो, 2 लोगों को बोर हो गया, गायब हो गए. कौन थे क्या मालूम? 47, 49 में से 2 गायब हो गए. 47 आई थिंक अनुजय गायब हुआ है, और एक कोई तो भी है. अनुजय Yes, आया sir. है. आया है. कोण झालं गायब काय माहिती. जाऊ दे, त्यांना नाही पडली तर आपल्याला काय करायचंय. Sir, example. हो गया तक? Yes. Yes, sir. ओके, नीचे ट्रायंगल लिखना होगा आपको अभी. ओके, यहाँ से जाओ आगे. ये मेन प्रॉब्लम लिख लो. फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इन ईच रो इज 1 and every other number in the array can be obtained by adding the two numbers appearing directly above it. तो यहाँ पे 2 है तो 1 plus 1 2, 3 है 1 plus 2 3, 1 plus 2 3. Okay, 4, 3 plus 1 4, 3 plus 3 6, 3 plus 1 4 again. समझ आ रहा है? 4 plus, देखो 3 plus 1 4, 3 plus 3 6, again 1 plus 4 5, 4 plus 6 10, 6 plus 4 10, 4 plus 1 5, right?
5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10, उसके अब जो दो नंबर से उसका एडिशन नीचे लिखना है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो क्लियर है तक? इसमें आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया मैंने, 4 6 4, क्या हो गया यहाँ पे 4 6 4। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी रेस टू 4 का ए रेस टू 4 प्लस 4 डिक्रीजिंग मोड, 4a³ then b plus 6a² b² plus then again 4ab³ plus b raised to 4, again a plus b raised to 5 होती है ये फार्मूला, a raised to 5 plus 5a raised to 4b plus 10a³ b² plus 10a² b³ plus 5a raised to a b raised to 4 plus b raised to 5। ये सेम फार्मूला आपको यहाँ पे मल्टी अरेंज करना है। क्लियर? लिख लो यहाँ से पहले ये पूरा, फिर हम लोग आगे जाते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. हो गया तो बोलो ना। Okay, so now your next point is about your permutations. Permutations. So now permutation and combinations. So your simple definition of permutation. Definition: a permutation of a set of n numbers
permutation of a set of distinct object is an order arrangement of these objects. Or simply we can write or any arrangement of a set of n object, any arrangement of set of n object in a given order is called a permutation. It's called a permutation of the objects. क्या होगा? Taken all at a time. सब जितने भी ऑब्जेक्ट सब लेने हैं. Taken object all at a time. But suppose any arrangements. ठीक है. Suppose any arrangement of any r less than equal to n of these objects in a given order is called R permutations. R permutation or a permutation of an object taken R at a time, or permutation of n objects taken R at a time. ठीक है, यहां तक लिख लो पूरी डेफिनेशन, फिर मैं आगे शिफ्ट करता हूं. सिंपल डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन. It means what? Your order arrangement of R elements of set then are called as R permutation. Suppose here अगर मैंने आपको दिया एक sample set दिया है, set is equal to what? Here 1 to 3. Three values are there, and we can arrange this value is into 3, 1, 2 is a permutation of S. Again, the arrangement of 1, 2 is a 2 permutation. दो ही अगर नंबर लिए हम लोग तो 2 permutations. It means what here? The number of R permutations of a set with n elements is denoted by P and R. So we can find P and R using the product rule. देखते हैं आगे, पहले इतना देखो. एंड हुआ कि बोलो मुझे.
Clear? Yes, sir. शायद बच्चे बोर हो गए, भागने लग गए बच्चे। 44, ठीक है, देखते हैं हम लोग लेते। नाउ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज द सेट ऑफ लेटर्स A B C D, then फर्स्ट वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? B D C A, again we can write D C P A, again we can write A C D B, are permutations of four letters. It means what you are taken all at a time. सारे लिए हम लोगों ने, बट सेकंड पॉइंट में सपोज मैंने सिर्फ लिया आपको BAD, then ADB, then CBD, and what your BCA are permutation of four letters taken, कितने लिए हम लोगों ने? 3 at a time. 4 लेटर का परमुटेशन है, बट हमने कितने लिए? 3 at a time. ऐसे ही लाइक दिस, सपोज AD CB DB DA and BD are permutation of four letters. Permutation of the four letters taken two at a time. Two at a time. It means what here? So therefore, the number of permutations of n object taken are at a time is denoted by हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? ओनली उसमें से टेकन आर एट टाइम, सो वी डिनोटेड बाय दिस वैल्यू इज ऑर्डर पी परमुटेशन ऑफ n comma r, PNR, or we can denote it by like this, or simply we can write NPR, or we can write PNR as like this, or simply P of NR और NR, इस वे से हम लोग उसे लिखेंगे। ओके, बट मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? बाय यूजिंग दिस और दिस, दोनों में से कोई भी हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। पहले ये प्रेफर करते हैं, द परमुटेशन डिनोटेड बाय दिस PNR. ओके, so write down. It means what here? The set of letters A, B, C, D. So we can use four permutations, four letters at 3 at a time, 4 at a time, 2 at a time, like this. It means what your 3 permutation, 2 permutation, like this. R permutation बोलते हैं, so 3, 2, 4 permutation, like this. So you can add this value P and R equal to. So this theorem is what here. ठीक है, इतना लिख लो, फिर मैं आपको थ्योरम में बोलता हूँ और एग्जांपल भी लेता हूँ।
आदित्य, आकाश, अमेय, अंजली, अनुजय, अपूर्वा, आयुष, चेतन, दर्शन, गणेश, गणेश, गायत्री, हेमांगी, जुई, कोमल. पूजा आहेस का पूजा? पूजा नारसे, प्रबळ, Yes, sir. प्रियंका पाटील, राज राऊत, रणजित, रेणुका, रितेश, रुक्मिणी, साक्षी, प्रधान, समीर, संकेत, सार्थक, सात्विक, सौरभ, श्रीवाणी, श्वेता, सिद्धांत, सिद्धेश, सुमित, सुमित, सुशांत, स्वांजली, वैभव, विक्रम, विपुल, वाल्मिक, युवराज. ओके. क्लियर हो गया? So we denoted Yes, as sir. a PNR or NPR. So number of permutations of n object taken R at a time is noted by PNR. The first value Pn of R, that is the permutations of n object we taken as a R at a time. अब ये PNR का फार्मूला थ्योरम क्या है उससे हम दिखा दो आपको. हो गया यहाँ तक आपका? It means what your first element of permutation can be chosen in n number of ways. Since there are n elements in the set, then what your there are n minus 1 ways to choose the second elements of permutation. Since there are n minus 1 elements left in the set, after using the elements pick for the same first position. So similarly, there are n minus 2, n minus 3, n minus 4 ways. And until there are exactly n minus r minus ways, it means what your n minus r plus 1 way to choose the rth element. So consequently, we use the product rule. So P and R equal to what your n minus 1, n minus 2, n minus 2, n minus 3, n minus 4 to dash what your n minus r plus 1. So this is your r permutation of the set. So we can use directly P and R equal to n to n minus 1, n minus 2 up to dash n minus r plus 1. So we can use directly n factorial upon n minus r factorial. Okay, यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we can write next one theorem is there. So theorem. Theorem. Theorem one, simple theorem. The number of R permutation. The number of R permutations of set within n objects. N objects or n distinct element. We can write distinct element. अरे and distinct elements. So P and R equal to n into n minus 1, n minus 2, dash. कहाँ थे हमारा प्रोडक्ट रूल? n minus r plus 1. Okay. So similarly, we can use this value as a P and R
मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द परमुटेशन कैन बी चूजन इन n नंबर ऑफ वेज, देन n एक कैंसिल कर n माइनस वन, देन n माइनस टू, देन n माइनस अप टू r प्लस वन. So p n r equal to n into n minus one, n minus two, n minus three, dash n minus r plus 1. It means what here? So simple formula permutation is what? P and R equal to this value is what here? N factorial upon n minus r factorial. N factorial upon n minus r factorial. Simple formula of P and R. Okay? Write down. Theorem. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we can take one example. For example, how many ways are there to select a first prize, second prize winner, second and third prize winner from 100 different people who have entered a contest. Okay. मतलब यहाँ पे देखो कितने पीपल से 100, n equal to what your 100 people. उसमें क्या निकालना है हमें, थ्री विनर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके. इट मीन्स व्हाट हियर, p n r equal to थ्री परमुटेशन ना, तो क्या फॉर्मूला है, n माइनस वन, n माइनस टू, डैश n माइनस r प्लस वन. राइट. यहाँ तक मतलब क्या जाएगा, p 103 क्या होगा, 100 into n माइनस वन मीन्स व्हाट हियर 99 इंटू क्या होगा 98. कहां तक जाना है, n माइनस आर प्लस वन. सो 100 - 3 + 1 मीन्स व्हाट हियर 97 + 1 दैट इज योर 98. राइट. ये देखो n माइनस आर प्लस वन मतलब क्या गया 98. तो यहाँ तक वैल्यू. सो हमारा फाइनल वैल्यू कितना आएगा, कितने परमुटेशन हमें लगेंगे, जो भी वैल्यू आती है वो लिखो यहाँ पे. दीज आर द परम्यूटेशंस. क्लियर. क्लियर यहाँ तक. मुझे 100 लोगों में से Yes, तीन sir. लोग चुनने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड
कहाँ तक जाना हमें n माइनस आर प्लस वन मीन्स व्हाट योर 90 100 माइनस 397 प्लस वन मीन्स 98 तक. So 100 into 19 into 98 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? That is your I think 970200. इतने परमुटेशन हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे. क्लियर? So done this problem. Clear? Your permutations. Formula is what your Pn are equal to n into n minus 1 n minus 2 to dash 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 n minus r plus 1. Or simply we can write n factorial upon n minus r factorial. Okay, done? Yes, sir. Done, sir. Okay, now next problem. Leland, continue. Okay, चलो हम लोग रुकते हैं आज यहीं पे. और जूही और सरांजलि मुझे गालियां मार रहे उधर से. No, sir. चलो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं. ओके, चलो बाय बाय. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम परमुटेशन प्रॉब्लम एंड कॉम्बिनेशंस. फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, चलो बाय बाय गाइस. एंड आई थिंक हैप्पी दशहरा. बाद में लेक्चर Thank you, sir. इन एडवांस. ओके, चलो बाय बाय.